viewers, welcome back to my channel. Today we are diving into a critical topic in healthcare, that is HAI, hospital acquired infection. It is also known as nosocomial infection. Now let me introduce about the hospital acquired infection first. Hospital acquired infections are a major concern for healthcare providers and patients. HAI can lead to prolonged hospital stays, increased healthcare costs and even death. What are hospital-acquired infections? HAI are infections that patients acquire during their stay in a healthcare facility. These infections can be caused by bacteria, viruses, fungi, or other pathogens. Common types of HAI include urinary tract infections, surgical site infection, and bloodstream infection. We will declare the patient as the HAI infected when the patient is patient stays in the hospital for 48 hours, and then he or she gets infected with a pathogen caused by a variety of factors including poor hand hygiene, contaminated medical equipment, and overcrowding in healthcare facilities. Patients with weakened immune systems are also at higher risk of developing HAIs. So risk factor includes, there are several risk factors that contribute to the occurrence of HAI. Weakened immune system due to age and health is a major factor. Then followed by that, surgical procedures, invasive devices, length of hospital stay and antibiotic use. हॉस्पिटल में कितने टाइम तक वो पेशेंट रह रहा है, लाइक एडमिटेड है, और एंटीबायोटिक का यूज, लाइक एंटीबायोटिक का रेशनल यूज हो रहा है या नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर ज्यादा यूज करते हैं तो फिर एमडीआर के चांसेस हो सकते हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस. ओके, एंड क्लोज प्रोक्सिमिटी टू इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, जिससे भी लाइक कोई भी इंडिविजुअल उसके आसपास, एक हॉस्पिटल में लाइक एक वार्ड है तो उसमें काफी पेशेंट्स होते हैं, या कोई आईसीयू ही है तो उसमें काफी पेशेंट होते हैं, जो दूसरा इन्फेक्टेड है तो उससे बगल वाला पेशेंट अगर प्रॉपरली हैंड मूवमेंट ना किया गया, हैंड हाइजीन के मूवमेंट नहीं किए गए, या जो भी रीजन है उससे हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल कंटेमिनेटेड है, वो भी एक रीजन हो सकता है एचएआई का. अंडर स्टाफिंग एंड हाई पेशेंट लोड की वजह से भी हो सकता है. वो दो तरह से होते हैं, इंडोजेनस एंड एक्सोजेनस. इंडोजेनस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से, लाइक नॉर्मल फ्लोरा, हमारी बॉडी में जो भी नॉर्मल बैक्टीरिया या जो भी नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी के, उसकी वजह से अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाते हैं. किसी भी लाइक कब डिस्टर्ब होते हैं, सपोज किसी का एक्सट्रैक्शन होना है टीथ का, तो उसमें क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, नॉर्मल फ्लोरा, हमारे माउथ की फ्लोरा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, उस कंडीशन में एंडोजेनस इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनमें हो सकते हैं. और एक्सोजेनस इन्फेक्शन वो होते हैं जो कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से हमारे मतलब या पेशेंट के बॉडी में वो कोई भी पैथोजन एंटर करता है, लाइक इन्वायरमेंट हो सकता है, या कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट हो सकता है, या कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हेल्थ केयर वर्कर्स से हो सकता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. देन सोर्सेस के बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन वो होते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट से हो सकता है, दो तरह से होते हैं कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. ट्रांसफर जो भी इन्फेक्टेड लाइक कोई भी इन्फेक्टेड या कॉलोनाइज पर्सन से एक पर्सन से दूसरे में होता है तो वो फिजिकल कांटेक्ट हो गया, जिसको डायरेक्ट कांटेक्ट कहेंगे. इनडायरेक्ट लाइक ट्रांसमिशन किसी सरफेस से, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाथ रखा और कोई और पेशेंट आता है, वही सेम सरफेस या ऑब्जेक्ट या से टच होता है वो पेशेंट, या सपोज कभी कभी ऐसा होता है लोग हॉस्पिटल में लापरवाही करते हैं कि बेडशीट चेंज नहीं किए हैं या फिर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है, तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी एचएआई होते हैं. ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में वो होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, या फिर वो कफ करे, स्नीज करे, जिससे कि दूसरे मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में कोई भी पेशेंट है उसको वो ड्रॉपलेट जो है वो इनहेल कर ले, इसकी वजह से हो जाता है. एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में वो होता है फाइन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं वो एयर में रह जाते हैं और वो इनहेल हो जाते हैं दूसरे इंडिविजुअल से अगेन, तो वो भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं. व्हीकल ट्रांसमिशन में होते हैं, जैसे कि कोई भी कंटेमिनेटेड फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो इससे क्या होगा, कोई भी कंटेमिनेटेड फूड जो भी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करे पेशेंट को, सपोज वो कंटेमिनेटेड है या पानी कंटेमिनेटेड है, तो वो पेशेंट ले रहा है, तो उससे क्या होगा, वो व्हीकल ट्रांसमिशन में आता है वो कैटेगरी. वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन किसी भी वेक्टर्स के थ्रू, लाइक इंसेक्ट्स, टिक्स एंड एनिमल्स. ओके,
वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम अ मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, जब पार्चुरेशन के टाइम पे हाइड्रोजेनिक किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू, ट्रीटमेंट या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कोई कंटामिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है वो यूज हो रहा है, इससे भी HAI होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्प्लीकेटेड टू HAI, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो HAI कॉज करते हैं। तो HAI जो है वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, लेकिन सारे ही होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट। लेकिन यहाँ पे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने मेंशन किया है जो कि सबसे ज्यादा कॉज करते हैं, उसका एक निमोनिक है स्केप। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि ई से इंट्रोकोकस फीजियम, एस से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, के क्लैप्सिला निमोनी, ए एसिनेटोबैक्टर बाउमेनी, P. Pseudomonas aeruginosa, E. Enterobacter species. Other than these, E. coli, Legionella, Mycobacterium tuberculosis, Clostridium difficile, Candida albicans, blood-borne HIV, and hepatitis B and C also cause. There are several types of HAI, including UTI, surgical site infection, that is also known as SSI, bloodstream infections, and pneumonia. Each type of infection has its own set of symptoms and treatment options. Most common types of them are like SSI, as I told you, surgical site infection, infections that occur at the site of surgical incision or operation. They can involve skin, tissues, or organs. And UTI, infections in the urinary system, often associated with the use of urinary catheters. Central line associated bloodstream infection, CLAPSI, infections that occur when a central venous catheter is used, affecting the bloodstream. Ventilator associated pneumonia, pneumonia that develops in patient on mechanical ventilation due to the presence of breathing tube. The percentage of urinary tract infection caused by the catheters, also known as COTI, catheter associated urinary tract infection, is 33%. And ventilator associated pneumonia percentage is 15%. And after catheter, the major cause of HAI is SSI, which is 31%. And at last, infection, which is CLAPSI, the percentage of the HAI is 13%. And all these diseases like UTI, COTI, CLAPSI, and VAP, we can consider is after the 48 hours of admission in the hospital. But in case of SSI, we considered it as a HAI after 30 days of surgery and before the 90 days. Preventing hospital-acquired infection. For the prevention of hospital-acquired infection, we need to follow these hygiene, hand hygiene, personal protective equipment, proper use of PPE, biomedical waste management, like proper use of whatever the dustbin is, like yellow, red bin, puncture-proof white bin. It should be properly used in the hospital. And then spillage cleaning and disinfection should be done properly. Now, are you aware of the 5 movements of hand hygiene? You should be. So, before, whenever any healthcare worker or doctor, whenever they go to patients, they should use hand hygiene procedure, whatever the steps of hand hygiene, before touching the patient. And the second one is before any aseptic procedure or before any procedure, and after a procedure or body fluid exposure, and then after touching the patient, then after touching a patient's surrounding or after leaving the surrounding of the patient. These are the 5 movements of hand hygiene. The steps of hand hygiene, like whenever if there is any ornament or watch, we will firstly remove that, and then we will take a hand rub or hand wash in the palm. Then we will rub the hands like this, palm to palm, and then back to palm with both the hands. Then we will interlace the fingers, and then back of the fingers on palm, both the sides. Then rotational rubbing of both the thumb, and then we will scrub the nails on the palm. Then rinse the hands with water. Then dry it with a single use paper towel, or otherwise leave it for the air dry. Close the tap with that same paper towel or using the elbow handle if you are not using the paper towel. Now, what do you understand by PP?
personal protective equipment. Most of the people have misconception of the people who wear like whole gown and mask and everything, that is known as PP. But no, whatever the term used as personal protective equipment, whatever is protecting us, whether it be gloves, gowns, mask, anything, if you're using it individually, it comes under the category of PP. So there are two terms in the PP: donning and doffing. Donning means for donning term is used for wearing the PP, and doffing is used for the removal of PP. There are proper steps to be followed. Like for the donning, we need to wear the gown first, then mask or respirator, goggles or face shield, and then followed by gloves. And for doffing, we need to remove the gloves first, then face shield, after that gown, and followed by that mask. Mask will be removed at last. Now, what is HICC? Hospital Infection Control Committee. It is a vital component of a healthcare facility responsible for overseeing infection prevention and control measures. The committee is dedicated to minimizing the risk of hospital-acquired infection and promoting a safe and hygienic environment for patients, healthcare workers, and visitors. There are so many persons included in this HICC, like nurses, healthcare workers, directors, chairpersons, etc. Functions of Hospital Infection Control Committee. HAI surveillance develops a system, antimicrobial stewardship program, policy, staff health, outbreak management, education, reviews, and HICC meetings. The conclusion part: hospital acquired infections are a serious concern for healthcare providers and patients. By understanding the causes and types of HAIs and implementing strategies for prevention, we can improve patient outcomes and reduce the spread of infection in healthcare facilities. If you have any question or any suggestions, let me know in the comment